So today's topic synoptic gospel, and we are going to have a look, or we are going to identify the major similarities, differences, unique character. क्या क्या फर्क है इन तीन सुसमाचार में, क्या क्या बात है एक समानता है, क्या क्या बात है अनौखिक बात है इन तीन सुसमाचार में। इन तीन सुसमाचार को हम सिनॉप्टिक गॉस्पेल करके इंग्लिश में थियोलॉजी के लिए एक टर्म, एक टाइटल दिया गया है। एंड फर्स्ट थ्री गॉस्पेल इज मार्क, मैथ्यू एंड Luke, or in our Bible Matthew, Mark and Luke. And we already completed the survey of these three gospel, and today we are going to have a look into synoptic gospel, and in that we are going to check what are the similarities it has, what are the dissimilarities or differences, and what are the unique content is there in Matthew, Mark and Luke. So the first point, introduction, the introductory part speaks about New Testament, and it has 27 books, 27 किताब है, और it has different authors, and the writing style, genre is different. We have gospel, we have historical book, that is Acts of the Apostles, and we have Patri, letters, and we have one prophetical book or apocalyptic, that is Revelation, प्रकाशित वाक्य, जो भविष्य के बारे में समझाता है। लिखने का तरीका अलग है, लेखक अलग है, किताब भी अलग अलग है, समझ आया पक्का। एंड दिस इज देयर इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट। एंड द फोर गॉस्पेल ऑलवेज हैड अ प्लेस ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू द क्रिश्चियन। दे आर द मेन सोर्स ऑफ आवर नॉलेज अबाउट लॉर्ड्स लाइफ। पहला जो चार सुसमाचार में से हमको यीशु मसीह कौन है, उन्होंने क्या क्या किया, और फ्रॉम फर्स्ट फोर गॉस्पेल्स वी कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ द बर्थ ऑफ जीसस टुक प्लेस and how he came to the earth, and what all the ministries that he did, and what all the examples he left that we should follow. यीशु मसीह के बारे में सीखने के लिए फर्स्ट फोर गॉस्पेल हम पढ़ा तो समझ आएगा। इस फर्स्ट फोर गॉस्पेल से यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या उदाहरण करके रखा, और क्या क्या बातें हम हमारे सेवकाई में करना है, हम सीख सकता है, समझ आया पक्का। And recently some pastor was saying during Sunday's message, Jesus Christ is the only person who did not say sorry to anyone. यीशु मसीह एक ही इंसान है धरती पर आया था, और है किसी से क्षमा नहीं मांगा, सही है। Do you find any events that happen in the gospel that Jesus asked sorry to anyone? Why? Because he did everything by thinking which is right and which is, or what is right and what is bad. अगर मैंने कुछ किया तो किसको कैसा लगेगा या उसका परिणाम क्या होगा, अच्छे से सोच समझ कर किया। That's why when you read this first four gospel, you will get an idea how we should live. हम कैसे जीना है, पहला चार सुसमाचार से समझ आ जाता है एक व्यक्ति को। So लैंग्वेज में फर्क है, कंटेंट में फर्क है, लिखने का तरीका में फर्क है। So there is difference in language, and there is difference in content, and there is difference in even the way of writing. So introduction you understood. So you have to write the heading introduction, and you have to write all these things which I explained in a point wise, and that will be your report, class work. Point number 2. In the beginning itself I thought I will not give time to copy these things, because it is very vast and it will take, it needs more time for you to copy. So what you have to do, did you understand the introduction part? It speaks about New Testament, first four gospel, and what are the content that we are going to study from this paper or this subject. Defining the term gospel, synoptic gospel. Gospel का शब्द क्या है? It is an Anglo-Saxon word, God spell. God spell. So put capital G here. God spell का वहाँ कैपिटल G डालना, which means good news. God spoke many things, and those things are good news for us. So meaning of the word gospel is God's spell or good news. It comes from Greek word evangelion, which means good news. सुसमाचार, इसका मतलब क्या है? खुशखबरी। अभी समझ आया? सुसमाचार, ये जो समाचार हमको मिला, ये सुनने से, इस पर विश्वास करने से हमारे लिए गुड वाला ही होगा, समझ आया? सुसमाचार, गॉस्पेल मीनिंग
Then it refers to a proclamation or message. इसका दूसरा मतलब है घोषणा करना, एक अच्छा संदेश या सुसमाचार को हम घोषणा करते हैं. It came to be used to denote Christian writing only since 2nd century CE. It came to use to denote Christian writing only since 2nd century. 2nd century कॉमन एरा का समय है ही गुड न्यूज करके या गॉस्पल करके शब्द को मसीह लोगों का उपयोगी मसीह लोग उपयोग करना शुरू किए या मसीह लोगों का समाज में इसका उपयोग शुरू हुआ. Earlier the word gospel is there. Whenever they hear some good news, they say in Greek evangelion, which means good news. समझ आया? लेकिन जब मसीह लोगों का बीच में इसका उपयोग कब से लेकर शुरू हुआ, गुड न्यूज या गॉस्पल इवांगेलियन, 2nd century कॉमन एरा CE से लेकर. By the end of 2nd century, it was used to mean the canonical gospel. 2nd century दूसरा सेंचुरी का दूसरा शताब्दी का अंत में पहला 4 सुसमाचार को और सुसमाचार के बारे में समझाने के लिए गॉस्पल करके शब्द का उपयोग करना भी शुरू हुआ. कब शुरू हुआ? 2nd century का अंत में. So finally gospel denotes good news preached by Jesus, preached about Jesus, and book that contain memories of Jesus. So putting all these things together, gospel सुसमाचार का मतलब क्या है? जो बात यीशु मसीह ने बोला, जो बात यीशु मसीह ने प्रचार किया, जो बात यीशु मसीह ने करके दिखाया, और यीशु मसीह का यादें, मेमोरीज को हम क्या बुलाता है? गॉस्पेल, सुसमाचार. Did you understand the term gospel? You understood. For you it will be little difficult, but you understood what I am speaking about. So gospel करके शब्द के बारे में कितने लोगों को समझ नहीं आया? It comes from Anglo-Saxon word, then Greek word, then different meanings, and according to centuries the usage also differs. समझ आया? ये एंग्लो-सैक्सन में क्या हुआ? एंग्लो-सैक्सन शब्द से इसका मीनिंग, इसका शुरुआत हुआ गॉस्पेल. कौन सा ये भाषा है? एंग्लो-सैक्सन itself is a रूट, मूल भाषा करके हम बोलते हैं ना. एंग्लो इंडियन सुना, उसके बारे में बाद में बताता. वो भाषा का जड़ मतलब बहुत पुराना भाषा जो होता है ना, जो पुराना समय से सिविलाइजेशन के समय से बात करके आया, वहां से इसका शुरुआत हुआ. गॉड स्पेल. एनी अदर डाउट? Then meaning of the word synoptic, it comes from the Greek word synopsis, which means seeing together. It comes from the Greek word synopsis, which means seeing together. It was labeled by the synoptic. It was first labeled the synoptic gospel by J.J. Griesbach, German biblical scholar, at the end of 18th century. 18 शताब्दी का अंत में एक पंडित था. पंडित का नाम क्या है? J.J. Griesbach करके एक पंडित ने इस सिनॉप्टिक गॉस्पेल करके टाइटल को उपयोग किया. So during the time at the end of 18th century, a scholar named J.J. Griesbach, he used this term synoptic gospel in order to speak about first 3 gospel. समझ आया? पूरे पंडित का नाम क्या है? J.J. Griesbach. The word synopsis, फर्स्ट टाइम उन्होंने उपयोग किया सिनॉप्टिक करके शब्द या सिनॉप्टिक गॉस्पेल करके लेबल उन्होंने दिया. उनका नाम क्या है? J.J. Griesbach. Then the Greek word synopsis means seeing together, and I have already given you why we say seeing together. So Matthew, Mark and Luke we are going to see together. And why we are seeing together? The content is same, that's why we are going to see together. Mark contained 93% shared information, Matthew 58%, and Luke contained 41%. And we know two source hypothesis, all these things, all these arguments, thesis came. मतलब Marcus, Luke, and Matthew, the content is almost same, but in a different style. Writing style is different. So synoptic का मतलब क्या है? समझ आया? And
the word synoptic speaks something, some other thing, that it also has some other meaning. These three gospels looking together or looking similar. Why? Because they are dependent to each other and they took materials from different sources at the same time, same sources. ये तीन सुसमाचार एक समान इसलिए है वो एक दूसरों के भी मदद लिया और अलग अलग स्रोत का भी मदद लिया. मदद किसके बारे में खोजने के समय लिया? यीशु मसीह के बारे में खोजने के लिए और यीशु मसीह के बारे में लिखने के लिए लिया. And they took they got the help from Holy Spirit. That's why they made it in such a way. Even today, those who are reading, they will believe and they will get baptized. समझ आया? पक्का? The evolution of the we can say the development of synoptic gospel or how a synoptic gospel करके topic धीरे 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 बढ़ते आया. How the topic or the subject synoptic gospel got developed during different stages, or what are the stages we have when we study about the topic or subject synoptic gospel. मतलब कौन से युग में कैसे कैसे इस टॉपिक बढ़ते बढ़ते आया और how the synoptic gospel got attention in Christian community according to different periods. समझ आया? So historical part. Christian writings did not exist from the beginning, and there was at least 30-year gap between death of Jesus and the first gospel. पहला जो सुसमाचार है मानता है मरकुस का करके, वो सुसमाचार लिखने का और यीशु मसीह का मृत्यु का बीच में लगभग कितना साल का फर्क था? 30 साल, 30 years का गैप था. So after the death and ascension of Lord Jesus Christ, they took 30 years gap to document the first gospel. So I will be giving the summary of this entire paragraph. Why? Because today morning or when I prepared this, I studied or I read. So I will be giving the report of that paragraph. So first paragraph speak about there was a gap between 30 years gap between first gospel and life and ministry of Jesus Christ, and after the death of Jesus Christ, the first gospel was wrote down after 30 years gap. समझ आया? इतना बात है. कितना साल का फर्क था यीशु मसीह का मृत्यु और स्वर्गारोहण का और पहला सुसमाचार का? 30 ईयर का लगभग. Then the story or the historical thing were preserved by oral tradition, which means मौखिक रूप से यीशु मसीह का कहानी को फैलाते हुए आया था उनका चेले लोग. So his disciples started spreading his history or his story through preaching or through sharing it. समझ आया? Then in fact those days our oral tradition was always preferred and carried more authority than written document. वो युग में लिखित और लिखा हुआ डॉक्यूमेंट से ज्यादा कुछ लोग कुछ बोला तो उसको इंपॉर्टेंस देते थे. So at that time, more than the written document, oral tradition were considered as the important document. So when somebody is speaking about someone, they used to think this is truth. At the same time, there are eyewitness alive to bear witness. So at the same time, one more evidence was eyewitness, साक्षी लोग जो यीशु मसीह को देखा था जिंदा था उस समय में. For example, I am speaking about a topic from here, and one among you already know that topic, and what you will say? Yes, सही है करके बोलेगा नहीं बोलेगा? So I am speaking about one topic, and you know about that topic already, and while sitting there, what you will say? Yes, that is truth. So by saying that, even others will believe it is true. समझ आया? मैं बोलने के समय आप लोगों को भी ये बातें जानते हैं तो आप लोग पहले कहाँ सुने तो आप लोग भी बोलेंगे, क्या बोलेगा? So in the same way, when oral tradition was in first position, when somebody used to speak about Jesus, they had even eyewitness sitting in the community, or the one who is speaking, he himself is the eyewitness. So वो बोलेगा मैंने मेरे नजरों से देखा था 5,000 लोगों को खाना. Then second paragraph. As the primitive Christian witness increased in number and time passed, there came difficulties and faced necessities which compelled them to produce writing. So पीढ़ी बढ़ते गया, generation started growing, developing, and there was a need. The eyewitnesses were died,
जो लोग साक्षी था वो मर चुका है and there is a problem. The eyewitness spoke और मौखिक रूप से कुछ बात बताया. पीढ़ी बढ़ते 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 कुछ लोगों को ऐसा वाला एक दिक्कत आ गया, कहानी भी सीधा सीधा नहीं पहुंच पा सकते. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ बातें बोलता है इधर का 10 सबसे लास्ट गोपाल जाकर किसी से बोला तो कैसे बोलेगा, उदाहरण पूरा का पूरा समाचार शायद. So there was a difficulty, there was a tension. These historical things which is truth, it is slowly getting a threat that people don't even know these things are. So this idea came to the authors and that idea came to the Holy Spirit to document everything. समझे? So from oral tradition there was a shift to writing, written document. Then the factor also include due to delay in parousia, eyewitness began to die. Parousia means second coming. So those who are preaching at that time, they used to say Jesus Christ is going to come again. So they preach, and there is a big delay. There is a big gap between second coming and preaching. So eyewitnesses are getting vanished, we can say. Eyewitness तो साक्षी था वो नष्ट हो मतलब वो मरते जा रहा है. So there was a need for the church or the community to write down everything for the next generation. So slowly from oral tradition, the shift happened to written or writing tradition. समझ आया इधर तक? पहले कैसा था? बोलने से था, उसके बाद पीढ़ी बढ़ते गया, तब जरूरत क्या आया? लिखना भी है, क्योंकि नहीं लिखा तो आने वाला पीढ़ी के लिए हम कैसा इस समाचार को. So while writing, giving an application, while writing, they did not even imagine, I am only writing, I am only doing hard work, what will be the use of this? But there was a great use. एक छोटा सा सोच मन में आया, वो करने से आज भी हमारा हाथों में सबूत है. Today, even today, we have the evidences of Jesus Christ in our hand. Why? A small idea and a big hard work these authors did. So what are the little things, little small ideas we have about ministry? A day will come, everyone will say a small idea or that idea will become a big solution for many people. We understood till this point. Then third paragraph. Saint Mark is recognized as the first evangelist who made effort to reduce some of the unwritten traditions to written gospel. So उसमें से मार्कुस था, एक इवेंजलिस्ट था, उनका मन में पहला सोच आया मौखिक बातों को मैंने लिखित बात बनाऊंगा. सो सेंट मार्क और संत मरकुस करके लोग उनको मानता है, और मरकुस एक पादरी था, उनका मन में एक सोच आया इस मौखिक बातों को मैंने मेहनत करके लिखित बात बनाऊंगा करके सोच आया. कितना अध्याय लिखा? 16 अध्याय में खत्म कर दिया. सो the word he used in between, immediately, time तो नहीं है, जल्दी जल्दी मुझे ये काम खत्म. Then later on another larger version of the same with additional materials was produced by Matthew. उसके बाद सेम कहानी को और कुछ बातें जोड़ते हुए the same historical evidence, the same इतिहास, Matthew wrote in a brief way or in an expanded way, which contains how many chapters? 28 chapters. Then later Saint Luke prepared another version and he mentioned how he is going to write. I am going to write to Theophilus in an orderly way. So 3 authors, same content, same thought, writing oral tradition into written document for the purpose of next coming generation to sustain the faith, and slowly we got Matthew, Mark and Luke, or Mark, Matthew and Luke in our hand. Till this point, if you have any doubt, you can ask. सर ये जो ल्यूक पे पेरेबल्स है वो किसका है, मतलब वो उसी का कहानी है, वो सच कहानी पेरेबल्स? What is meant by parable? स्टोरी, Drishtan. Kind of a narration, you can say. So who said it?
Luke very clearly said in the beginning, I am going to write something in an orderly way. Who spoke this thing? जी So why you are asking the parables are real? Parables also have one more meaning. In order to make us to understand something, sometimes we have to take parables. समझ आया? कुछ चीजें हमको भी समझाना है तो भी कुछ बातों को उदाहरण बोलना पड़ेगा. In many places, Jesus spoke parable and he gave the explanation also. समझ आया? Any other doubt? And the third point, the synoptic problem. I am again going to summarize. The great similarities and yet differences between Matthew, Mark and Luke is known as synoptic problem. मत्ती, मरकुस और लूक या मरकुस, मत्ती और लूक के बीच में फर्क और समानता और अलौकिक बात, इन तीन चीजों को हम क्या बुलाता है? सिनॉप्टिक समस्या. समझ आया? और सिनॉप्टिक प्रॉब्लम. The meaning of the word synoptic problem, the title synoptic problem in a simple meaning, why Matthew, Mark and Luke have similarities, differences and uniqueness. समझ आया? That is known as synoptic problem. समझ आया? What is mean by problem? समस्या. समस्या का मतलब क्या है? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन मिला तो वो गड़बड़ नहीं है. लेकिन समझ आया? कुछ तो गड़बड़ है, उसका एक अच्छा सॉल्यूशन मिल गया तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है. So after studying this, synoptic problem is not a problem for us. Why? Because we know who wrote it, how they wrote it and why they wrote it. समझ आया? Then what is the relationship between Matthew, Mark and Luke? There is a question mark. मत्ती, मरकुस और लूक का बीच में रिश्ता, it is also known as synoptic problem. Synoptic समस्या. How do we explain the similarities, dissimilarities and uniqueness? कैसा हम इन तीन बातों को विवरण करेंगे? अगर एक विश्वासी ने पूछा, तुम लोग बोलता है इधर उधर कॉपी नहीं करना है, ये नहीं करना होगा. अगर एक स्टूडेंट एक टीचर से पूछा, फिर मत्ती, मरकुस, लूक के अंदर क्यों इस कॉपी करके लिखा है? और वो लोग कर सकता तो, वो बातें बाइबल में जोड़ सकता तो मैं भी कर सकता हूँ. So finally the conclusion is they did not copy each other. They took the help to complete the matter in such a way everyone can understand it in its brief manner, detailed manner. समझ आया? समझ आया नहीं आया? आया नहीं आया? Synoptic problem मतलब क्या है? What is the relationship between these three gospel? Then we are going to enter into the main content. Similarities. First one, similarities of content. क्यों इस मुख्य विषयों पर और मुख्य विषय इन तीन सुसमाचार में एक समान है? So should I continue this topic or should I stop here and you can take this tomorrow? Option is with you. मैंने कितना चीजों को कंटिन्यू करूं और या इधर पोस्ट डालूं? पोस्ट डालूं बोला है, टुमारो कंटिन्यू करेगा बोला है. Do you think that is very heavy for you to understand if I take this point also? Let's pause here and try to repeat some. So I will be repeating from introduction once again. So you are asking me to pause here and we will continue in next class. Sure? Yes. So we completed 3 points: introduction, defining the term gospel, defining the term synoptic, and we came to how the synoptic gospel or how this thought got developed in different stages from oral tradition to writing or writing documents. Then we covered synoptic problem. So I tried my level best to explain this thing in such a way you can easily identify from the title itself. इस टाइटल पढ़ने से अंदर बात क्या है समझने के, जैसा मैंने बोला उतना बातें मुझे पक्का है. सो आप लोगों को बातें समझ आया नहीं, आप लोग पक्का करना. Did you understand this topic? ये हमें बस लेके पढ़ेंगे. मतलब क्लास से समझ नहीं आया? नहीं समझ आया, सब कुछ समझ आया. तो क्लास से समझ आया पक्का? समझ